Today we'll discuss about the representation of motion by graph. Okay. First of all, tell me that what is the importance of the graph? Anyone? Can you tell me the importance of the graph? It shows us location of the object. Location of the object. What else? It is what is a pictorial representation. Yes, ma'am. It is a pictorial representation. And besides that, second thing is it is easier method to know about anything और एनालिसिस. ठीक है, तो इससे हम क्या करते हैं, इजियर मेथड है टू नो अबाउट एनीथिंग और एनी एनालिसिस. And besides, it is a pictorial method and it's very easy method to remember anything. यहाँ पर सबसे पहले हम क्या देंगे पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन में. ठीक है, आप दो एक्सिस लेते हैं, एक वर्टिकल होगा और एक हॉरिजॉन्टल होगा. तो ये वाला जो एक्सिस है वर्टिकल एक्सिस, इसको हम क्या लेंगे, ये होगा y एक्सिस and this horizontal will be x axis. This x axis, for x axis we will take only what? Independent variable. Independent variables will be taken. And y axis, it will be dependent. Dependent on what? Dependent on the variable which is taken on the x axis. Okay, for example, if suppose we want to draw a graph for the marks which students have scored. Okay, marks which students have scored in the examination or for a particular subject if we want to take out. Suppose English में कितना एवरेज आया है, तो 60 आया है, 60% आया है. हिंदी में 70% है, साइंस में 59% है और सोशल साइंस में 72% है. Like this. So if we draw a graph, so this will be the origin. ये क्या लेंगे, origin लेंगे और यहाँ पर हम क्या ले लेंगे, सब्जेक्ट ले लेंगे, क्योंकि क्या है, इंडिपेंडेंट है. इंग्लिश, हिंदी, साइंस एंड सोशल साइंस. ओके, लाइक दिस. और यहाँ पे हम मार्क्स ले लेंगे, तो एक रेंज बना लेते हैं. यहाँ पे कितना होगा, 10, 20, 30, 40, 50, 60. Okay, like this. अगर ग्राफ बनाना होगा तो हम क्या करेंगे, इंग्लिश में कितना आया, 60 आया, तो इसका यहाँ पे पॉइंट डालेंगे, ये यहाँ पे हुआ. ठीक है, हिंदी 70, ये हुआ यहाँ पे 70. साइंस में कितना है, तो 59 है, तो 59 will be somewhere here. And in social science it is what, 72. 72 will be somewhere here. So what we are getting a graph like this. इस तरह का ग्राफ मिल रहा है. तो ग्राफ के थ्रू हमको पता, यहाँ पे एक नीचे आएगा ना, ठीक है, इस तरह का कुछ कर्व जैसा मिल रहा है. पता चल रहा है कि सबसे ज्यादा
परसेंटेज किस में है भाई? तो इट इज इन सोशल साइंस. So with the help of a graph, we get to know easy way that what was the highest score in which subject it was the highest score. So similarly, in this chapter topic motion, we have to draw the graph, pictorial representation for the different kind of motions. So when you will go for the graph, you will see two things. One this kind of graph, another one this kind of graph. Okay, this you are getting a slope. ये जो दिखा रहा है ये क्या है? स्लोप है. Why we are telling slope? This is y axis. क्या है? Y axis and this is x axis. So in order to know, if suppose we are drawing it for what? Distance time graph अगर draw कर रहे हैं, so how we will draw? एक्स एक्सिस पर क्या लेंगे? एक्स एक्सिस पर टाइम लेंगे, क्योंकि टाइम क्या है? इंडिपेंडेंट है. टाइम कीप्स ऑन मूविंग, इट डज नॉट वेट Yes, फॉर ma'am. एनीथिंग. ओके, सो टाइम इज इंडिपेंडेंट, सो वी विल टेक इट ऑन द एक्स एक्सिस एंड ऑन वाई एक्सिस व्हाट वी विल टेक डिस्टेंस. वाई एक्सिस पे क्या लेंगे? डिस्टेंस लेंगे. ओके, so when you are plotting this graph, what we are getting? We are getting a slope. ये क्या हमको मिल रहा है? ये हमको मिल रहा है slope मिल रहा है. Slope का क्या होता है? Slope is equal to y by x axis. ये आपका क्या है? एंगल बन रहा है यहाँ पर. अगर यहाँ पर इसको ज्वाइन कर दो, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो, तो ये क्या होगा? ये आपका परपेंडिकुलर है and this is the base and this is the hypotenuse. Okay, ये है Yes, आपका ma'am. hypotenuse. ये मैम एक्स के ऊपर क्या लिखे हैं? स्लोप इक्वल टू y axis by x axis. ओके तो y by x क्यों लिखाया है? Why it has been written y by x? Because y is what? Y is perpendicular and x is what? X is base and that is equal to what? Hypotenuse, and hypotenuse is a slope. Okay, Yes, ma'am. clear to one and all? Yes. यस मैम. ओके, तो आपको पहला जो कंडीशन मिलेगा वो आपको क्या मिलेगा? स्लोप मिलेगा. क्यों स्लोप? इसको क्यों स्लोप कह रहे हैं? व्हाई वी आर टेलिंग इट स्लोप? बिकॉज p by b is equal to h according to maths, है ना? perpendicular by base gives what? Hypotenuse. Hypotenuse is what? A slope. and p है क्या? p is this y axis only ना? This is the y axis. यस मैम. And base is what? This is the x axis. So p by b is equal to h क्या है? y by x is equal to slope. Okay. And what exactly is this? y axis पर क्या ड्रॉ किया हुआ है? इस पे क्या है? डिस्टेंस है ना? Yes, ma'am. Divided by what? Time. तो डिस्टेंस बाय टाइम क्या देगा? स्पीड देगा ना? Yes, ma'am. तो ये स्लोप क्या शो कर रहा है? स्पीड को शो कर रहा है. ओके, ये जो स्लोप बन रहा है, ये स्लोप किस चीज को शो कर रहा है? स्पीड को शो कर रहा है. बिकॉज y एक्सिस पे क्या है? डिस्टेंस है. x एक्सिस पे क्या है? टाइम है. एंड डिस्टेंस बाय टाइम इज इक्वल टू व्हाट? स्पीड. Yes, ma'am. गॉट इट एवरीवन? यस मैम. सब लोग समझ गए ये बात ना? सेकंड जो आता है, एरिया आएगा. व्हाट इट विल बी? एरिया. तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? व्हाट इज दिस? इज अ ट्रायंगल. व्हाट इट इज?
Triangle. ये क्या है? One ट्राइंगल। height, two basic height. तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है? व्हाट इज एरिया ऑफ ट्राइंगल? Half into base into height. half Half into base base into into height. height. इनटू बेस इनटू हाइट। Height. बेस क्या है आपका? बेस है ये x Time. टाइम, और हाइट क्या है? Height mm. Distance. आपका ये जो डिस्टेंस है जो p है, दैट इज योर हाइट। Yes, ma'am. इज इट और नॉट? Yes, ma'am. तो हमको यहाँ पर, यहाँ जो ग्राफ में यही दो फॉर्मूला पे, एक होगा एरिया और दूसरा होगा स्लोप। area and slope, two things we are going to study, and then we are going to derive the formula from there. Now let us see the first situation. When we will draw distance time graph. Distance time graph. Okay. In distance time graph, suppose any object A covers 2 kilometers. Okay, it covers 2 kilometers in 2 meter in 2 seconds. Okay, and in the another 5 second, in another 3 second or 4 second, it remain in the same position. So what will be the plotting? How will be the plotting? This is your y-axis. क्या है यहाँ पे? यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं? Distance. And this will be what? This will be time. So this is origin O. 1, 2, 3, 4, 5, 6. अब यहाँ से मान लो ये कवर किया, इतना डिस्टेंस कवर किया, ये इतना डिस्टेंस जो है, ये इतना डिस्टेंस कितना है? 2 मीटर का है। तो इसका यहीं पर पॉइंट बना रहेगा, ये इसी पॉइंट पे रहेगा। रेस्ट 2 मिनट पर भी वही है, 3 मिनट पर भी वही है, 4 मिनट पर भी सेम है, 5 पे भी सेम है, 6 पर भी सेम है। तो ये हमको ग्राफ जो मिल रहा है, ये कैसा ग्राफ मिल रहा है? ये कैसा मिल रहा है आपको? पैरेलल टू दी time axis. x axis. Time axis. Okay, x axis parallel to what? Parallel to x axis. Yes, ma'am. Okay, everyone. So this was what? Object is in what? Rest. So when object will be in rest, you will get this kind of figure. Yes, ma'am. Okay. क्योंकि रेस्ट पे मान लो ये अगर आपका ये ब्लैक बोर्ड है, ये अगर 5 बजे यहाँ पर था, तो ये 6 बजे भी यहीं पर रहेगा, 7 बजे भी यहीं पर रहेगा। Until unless if there is any motion or anyone doesn't remove it, it will be in the same position. So this graph is showing that the object is not moving. The same 2 मीटर जो डिस्टेंस इसने कवर किया, उतना ही मीटर डिस्टेंस वो कवर कर रहा है, 2 मिनट में भी, 3 मिनट में भी, 4 मिनट में। So whenever you get such kind of graph where distance is parallel to time, that will indicate what? That the object is in Rest. 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 Okay. Second, I'm giving you one table to draw the graph yourself.
not a graph, not a distance time graph for this. Quickly. So you will get a graph like this, na? And if Yes, you want to find out for AB, you will use this formula. Speed of AB is equal to what? S2. This whole is S2. From 50 to 0 to 50 is S2. And 0 to 30 is S1. S2 minus S1. And total time 0 to T2. That is your T2. And 0 to 6 is your T1. Yes, ma'am. T2 minus T1. And then you can get the speed of what? Then you can get the speed of AB. So while we are drawing distance time graph, we will get what? Slope जो रहेगा वो क्या show करेगा? That will be speed. Speed. So this was for uniform motion. Now another example I am taking for non-uniform motion. Question write down. Do it. Draw the graph. कि मैम डिस्टेंस डिक्रीज कैसे हो रहा है मैम? 4 सेकंड में अगर मैम 6 मीटर था तो 6 सेकंड में 4 मीटर क्यों हुआ? 6 सेकंड में 4 मीटर मैम. स्पीड स्लो हो गया, जाम में फंस गए. ये नॉन यूनिफॉर्म मैम महीना डिस्टेंस है. तो बढ़ना चाहिए ना मैम, डिस्टेंस तो बढ़ेगा ना मैम. क्यों? जरूरी तो नहीं है. जरूरी नहीं है. नॉन यूनिफॉर्म का मतलब ही क्या है? अनइक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. यस मैम. दैट इज नॉन यूनिफॉर्म मैम मोशन. डिस्टेंस मैम पॉजिटिव में ना रहेगा. नॉट नेसेसरी दैट हाँ टाइम तो इंटरवल तो सेम ना है, दो का ही ना डिफरेंस हो रहा है. यस मैम. बट यहाँ तो अनइक्वल डिस्टेंसेस हो रहा है. यहाँ टाइम इंटरवल इज सेम बट यहाँ डिस्टेंस का व्हाट इज डिफरेंट. And that is your Yes, ma'am. non-uniform motion. What is non-uniform motion? Tell me. When an object. All of you have noted the graph. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Now, write down a question. Write down. A train is starting from a railway station. A train starting from a railway station and moving with a uniform acceleration attains a speed of मैम मूविंग के बाद moving with uniform acceleration attains a speed of 40 kilometers. एक्सीलरेशन के बाद Acceleration attains a speed of 40 kilometer per hour. यस मैम.
in 10 minutes. Okay, ma'am. Find its acceleration. Find its acceleration. Okay. Find its acceleration.